right, let's get started. So, in the last class, we talked about the physical methods through which we can figure out how uh, acids can be identified. So, one of those methods was that you take litmus paper and litmus turns red for acid, blue for base, methyl orange goes red or pink for acid, yellow for base. तो हमने मेथड्स देखे थे. Similarly, if you wanted to know about the strength of an acid, कि वो strong acid है, weak alkali है, strong alkali है. So उसके लिए we had universal indicator, and that was the only way we said that the only way to figure out whether something is a strong or weak acid alkali is universal indicator or pH meter or pH paper. और उसमें हमने two-step process लिखा था. In the first one, we dip the pH paper, or if you have the indicator, then you add a few drops. And then you match the color with the chart. That is how you know the pH of something. Okay. Now, there is another physical process of doing that, and that is conduction of electricity. So here's how electricity is conducted. So electrical conduction and how it is related to bonding. We are going to compare three phases: solid, liquid, gas. Oh, sorry, not gas, aqueous. Because liquid or gas में तकरीबन एक जैसा behavior होता है. If something conducts in solid and liquid, then what kind of bonding does it have? It will be metallic. Because अगर वो solid में conduct कर रही है, तो उसका मतलब है उसके पास free electrons हैं. There is one extra thing, which is graphite. Graphite भी solid में conduct करता है. Graphite का liquid की conduction में कभी question नहीं आता. Now, if something conducts not as a solid, but only when liquid or aqueous, then what kind of bonding or structure does it have? Ionic bonding. Very good. It is ionic bonding. So it's an ionic compound. It has free ions or free ions, cations, and anions when it wants to conduct electricity in liquid or aqueous form. In solid form, they are held in place by the lattice. बिजली conduct कर ही नहीं सकते. So यहाँ पर free electrons हैं, यहाँ पर free ions हैं. Then there is one more case. The thing does not conduct as a solid, does not conduct as a liquid, but does conduct when dissolved in water. Any guesses? So the difference in liquid and aqueous is that liquid means you have melted it. So it's in the molten state. Okay, so liquid is molten. For sodium chloride, for example, when you melt it, that's around 801 degrees Celsius, और वहां पे वो liquid बन जाएगा. The lattice is broken. But aqueous का मतलब है you have dissolved it in water. Okay, so that's dissolved in water. So वो तो sodium chloride room temperature पे भी हो जाएगा. There is one kind of substance that only conducts electricity when dissolved in water. यानी कि उसके पास free ions मिलते ही उसको तब हैं जब वो पानी में डिसॉल्व होता है, यानी कि उसकी आयनाइजेशन होती है, and that is acid or alkali. When acids or alkalis are solid, they have covalent lattice or they have ionic lattice. When they're molten, not all of them have free ions. Some of them do. मतलब एल्कलीज में से कुछ हैं जिनके पास होते हैं, लेकिन एसिड्स के पास कभी भी नहीं होते. इनफैक्ट एल्कली को हम अभी इग्नोर कर देते हैं. और एक्वस स्टेट में एसिड हैज इनफ आयंस बिकॉज इट आयनाइजेस एंड इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. श्योर, weak acid will conduct less strongly and strong acid will conduct better. So let's suppose आपने उनको compare करना है, so you can simply check the brightness of a bulb. When you pass electricity through a weak acid, the brightness will be less. When you pass electricity through a strong acid, the brightness will be high. So that way you can easily figure this out. And then if something does not conduct at all, no matter what the state, that means it has no free electrons, no free ions. So this one is going to be covalent. And this is how we are able to figure out कोई चीज कैसे conduct करती है और कैसे नहीं होती. Now, this is another way of figuring out whether something is acid, whether something is base, and if it is strong acid, if it is weak acid, वो सारे का सारा हमें इससे
पता चल सकता है इस मेथड से. Alright. Now, ये हो गया physical process. One question is, will metallic conduct in aqueous? Now, metals usually don't dissolve in water. If they do, they react with water. तो इस वजह से the aqueous part doesn't really matter here. Because if they react in water, तो वो alkali बना देते हैं, ionic compounds बना देते हैं, तो वो फिर ionic compound की तरह react, मतलब बिजली conduct करेंगे. So metals don't dissolve, so we say कि aqueous का उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है. All right. How do you figure out the chemical processes? Now, this is a very important thing because it's going to bring in almost everything that you've studied in chemistry. This will involve redox. This will involve energy changes. This will involve rate of reaction. Almost everything that you've studied so far, solubility rules, ionic and covalent bonding, सब इस आज जो हमने पढ़ना है ना, दो reactions में सारे का सारा combine हो जाएगा. Let's see. So the chemical way of figuring out if something is acid. There are 4 or 5 different ways. हमारे syllabus में हम आज पहले वाला देखते हैं. So the first method is you take an acid and if you want to confirm कि ये जो चीज मैंने ली है ये acid है, add a metal to it. If metal is more reactive than H positive, why H positive? Because acids have H positive. Then it will react. Or hoga kya? Then it will produce salt and release hydrogen. And hydrogen is given off as hydrogen gas. You take an acid, you add a metal to it. आपको नहीं पता ना कि एसिड है, बहुत सिंपल है. मेटल ऐड करके चेक करो. आपको मेटल का पता होगा ना. अगर हाइड्रोजन गैस आती है वो एसिड है. अगर आपको एक रैंडम सॉलिड देता हूं, मैं आपसे पूछता हूं बताओ ये मेटल है कि नहीं है, और केमिकल मेथड बताओ इसका. फिजिकल मेथड आप बता सकते हो, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, हाई कंडक्शन होगी, गुड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी, गुड कंडक्शन ऑफ हीट होगी, सोनरस होगा, वो सारा कुछ है. मैलिएबल, डक्टाइल, वो सब फिजिकल प्रोसेस है. केमिकल प्रोसेस में आपसे पूछता हूँ ये सॉलिड है बताओ ये मेटल है. एड एसिड टू इट. अगर हाइड्रोजन गैस निकल रही है मेटल है. इसी तरह अगर एसिड का पता करने के वो एसिड है, एड मेटल टू इट. अगर हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो एसिड है. हाइड्रोजन गैस का कैसे पता चलता है? हाउ डू यू नो कि ये जो बबल्स आ रहे हैं ये हाइड्रोजन है? Sir, can I? Yeah, sure, go ahead. Sir, we can test it by hydrogen gas test. It will give What is pop it? sound. It will get pop sound on the light and splint. Very good. So hydrogen is explosive. You bring a flame close to it, it will explode. So you say it pops in a flame or it pops in a lighted splint. Don't say glowing splint. That's a common mistake. Glowing splint में flame नहीं होता, और flame नहीं होगा तो धमाका नहीं होगा. So it pops in a lighted splint. ठीक है. So ये reaction हमें वो सब बता रहा है. Now let's try to take an example from it. I take HCl and I add magnesium to it. Is magnesium more reactive than hydrogen? It is. What does it mean when I say कि एक metal दूसरे से ज्यादा reactive है? Hydrogen metal नहीं It है, but displaces. isn't that the same thing? अगर कोई डिस्प्लेस कर रहा है तो उसका मतलब है वो ज्यादा रिएक्टिव है तो उसका मतलब है डिस्प्लेस करेगा. अंडरलाइंग रीजन क्या है? इलेक्ट्रॉन लेवल पे रीजन क्या है? व्हाट इज हैपनिंग? व्हाट मेक्स समथिंग मोर रिएक्टिव? इफ यू हैवंट वॉच द रिकॉर्डिंग फ्रॉम लास्ट वेडनेसडे, वी टॉक अबाउट डिटेल के रिएक्टिविटी क्या होती है. ठीक है, इट्स ऑन यूट्यूब एज वेल, तो आप उसको देख लीजिएगा. The idea that one metal or one thing that makes positive ion is more reactive than the other simply means कि वो दूसरे से पहले इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है. It loses electrons faster than the other thing. So magnesium over here is more reactive, which means magnesium is able to lose electrons. Magnesium is able to oxidize faster than hydrogen. So अब यहाँ पे क्या होगा? Magnesium will lose electrons और hydrogen will gain electrons. So magnesium will, and simple words में हम कहते हैं कि ये displace हो गया. All that's happening is magnesium is losing electrons
and hydrogen is gaining electron. When hydrogen gains electrons, so H positive नहीं रहता, वो hydrogen gas बन जाता है, neutral हो जाता है ना. And when magnesium forms ion, so Mg+2 ion बनाता है, और Cl minus ion वहीं पे पड़ा हुआ है, ये खत्म हो गया है, और Mg2 plus पड़ा हुआ है, तो अब Cl को क्या करना पड़ेगा? It will bond with Mg2 plus. So Mg2 plus Cl minus, cross multiply the charges, and you have MgCl2. How do we know that magnesium loses electrons? Couple of reasons. Magnesium is a bigger atom, क्योंकि periodic table में magnesium is in the third row and hydrogen is in the first row. तो magnesium एक बड़ा atom है, so इसके लिए electron दूर है. It's in the third shell. For hydrogen, it's in the first shell. It's easier for magnesium to lose that electron. And if you don't want to think in that term, then you can easily remember the reactivity series. उसमें magnesium ऊपर है, hydrogen नीचे है. तो जो चीज ऊपर है वो ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करती है. Alright, now let's put in this state symbols. अब solubility rules मैंने आपको लास्ट मंडे को मेरा ख्याल है करवाए थे. Solubility rules को याद करें. अगर आपके पास नोट्स बने हुए हैं, take those notes out. अगर याद नहीं है, मैं दोबारा बता देता हूँ. स्नैप इज सॉल्युबल. स्नैप क्या होता है? सोडियम नाइट्रेट अमोनियम पोटेशियम, जिसमें स्नैप है वो सॉल्युबल होगा. यहां पे कहीं पे स्नैप हमें नजर नहीं आ रहा. ओके. अगर क्लोराइड है या हेलोजन है तो इट विल बी सॉल्युबल एक्सेप्ट सिल्वर एंड लेड. तो हाइड्रोजन के साथ सॉल्युबल है, मैग्नीशियम के साथ सॉल्युबल है. सल्फेट्स प्लीज कॉल बैक. लेड कैल्शियम बेरियम आर इनसॉल्युबल, बाकी सॉल्युबल है. So lead, calcium, barium are insoluble with sulfate. The rest is soluble. We don't have that at the moment, so हमें उसकी जरूरत नहीं अभी. And every carbonate, phosphate, वो जो कुछ भी है वो सब insoluble है. So 4 rules हैं. That's all we need to remember. Okay, so let's see. HCl is soluble. Anything that's soluble, you write AQ. Mg is solid, you write S. Hydrogen gas is gas, you write G. ठीक है. Now the next thing is writing the ionic equation. Ionic equation basically हमें बताती है कि what happens at the electron level. ठीक है, ये अगर redox reaction है तो क्यों है redox reaction? So let's see. एक तो तरीका इसको redox देखने का बड़ा simple है. You know that hydrogen is positive, Cl is minus, Mg is 0 because anything that is an element, it is 0. Over here, magnesium is positive 2. ग्रुप 2 में है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, positive 2 हो जाएगा. मुझे कैसे पता positive 2 हो जाएगा? periodic table में देखूंगा ग्रुप 2 में. Cl -1 है, मुझे कैसे पता? ग्रुप 7 में 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. periodic table वाला चैप्टर हमने पढ़ा था. हाइड्रोजन किसी और के साथ बॉन्डेड नहीं है, अकेला है, so it will be 0. So न्यूट्रल. इस न्यूट्रल के ऊपर भी वैसे 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन आता है कि why is it neutral? तो उसमें हमें बताना होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ज कहां से आया. हाइड्रोजन में प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं. द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑब्वियसली 0 हो जाएगा. एंड दैट इज ट्रू फॉर ऑल एलिमेंट्स. सो अब हमें ये चार्जेस पता लगे. इन चार्जेस से हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि हाइड्रोजन का चार्ज +1 से 0 हो गया. इट हैज रिड्यूस्ड. मैग्नीशियम 0 से +2 चला गया, इंक्रीज होया है, मतलब ऑक्सीडेशन. एक तो हमें यहां से पता चल रहा है. अब जरा एक काम करना है आपने. अगर आपने आयनिक इक्वेशन लिखनी है तो आयनिक इक्वेशन के लिए आपने सिंपली एनीथिंग दैट फॉर्म्स आयंस इन वाटर, उसके आयंस लिख देने. सो HCl इज एक्वस, इसका मतलब है उसके आयंस बनेंगे. जो भी चीज एक्वस है उसको आयंस बनेंगे तो ही वो एक्वस हुई ना. अगर आयंस नहीं बन रहे तो एक्वस कैसे हो सकती है? सो इसके आयंस बनेंगे. HCl विल स्प्लिट इनटू H पॉजिटिव and Cl negative. Remember, you have to look in the periodic table whenever you are writing the ions. अगर यहां पर कोई नंबर्स होते ना कि मतलब H3 और समथिंग कुछ और होता, मुझे 3 को इग्नोर करना है. मुझे देखना है कि इस आयन का फॉर्मूला क्या है, और फिर उस आयन को मैं देखूंगा. अच्छा, ये 3 लिखा हुआ है तो 3 ऐसे आयन्स हैं, ये 2 लिखा हुआ है तो 2 ऐसे आयन्स हैं. अच्छा, मैग्नीशियम सॉलिड है, आयनाइज नहीं हुआ, ऐसे ही लिख देंगे. Okay, over here, magnesium chloride. So magnesium ion है,
आयन कहां से आता है हमेशा पीरियोडिक टेबल से देखेंगे हम. सो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 2 में मैग्नीशियम, सो आई विल राइट Mg2+, या +2 भी लिख सकते हैं, यू वोंट लूज मार्क्स. अब ये देखें Cl2 है. Periodic table tells me Cl is in group 7, उसका चार्ज -1 होना चाहिए, उसका इस 2 से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए. Periodic table से तो मुझे ये पता चल रहा है, तो मैं वही करूंगा, मैं इसको Cl- लिखूंगा. तो अब मैं इस 2 का क्या करूं? This 2 is simply telling me I have 2 of this. ठीक है, so I will write 2 here. Sometimes there will be numbers that are part of it. मतलब अगर यहाँ पे NO3 लिखा होता तो मैं इसको ऐसे ही लेता, क्योंकि मुझे पता है कि नाइट्रेट के फॉर्मूला के अंदर 3 होता है, सल्फेट के फॉर्मूला के अंदर 4 होता है. लेकिन यहां पर आई नो कि ये अकेला है और इसका आयन हमेशा पीरियोडिक टेबल से पता चलेगा, और वो है Cl-. तो ये 2 है, तो मतलब 2Cl-. आई विल नॉट राइट Cl2, आई विल से 2Cl. इज एवरीबॉडी क्लियर ऑन दिस पॉइंट कि ये मैंने 2 यहां पे क्यों लिखा है? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन पूछें. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन. ये हाइड्रोजन है, इट्स अ गैस, इट डज नॉट डिसॉल्व, इट डज नॉट आयनाइज. सो ये ऐसे कैसे रहेगी? कैन एनीबडी टेल मी इफ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड? इट्स नॉट बैलेंस्ड, राइट? क्योंकि मेरे पास ये इक्वेशन भी बैलेंस नहीं है. मेरे पास यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो मुझे यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई विल गेट 2 ऑफ दिस, 2 ऑफ दिस. नाउ इट इज बैलेंस्ड. ओके, लेट्स सी. नाउ एनीथिंग दैट डिड नॉट डू एनी रिएक्शन है, कोई ऐसी चीज जो रिएक्शन से पहले जैसी थी अब भी बिल्कुल वैसे ही. कैन यू आइडेंटिफाई समथिंग? Magnesium. Sir, Let's magnesium. see. Let's see. That's such a common issue because you have to pay attention to the charges. यहां मैग्नीशियम का चार्ज क्या है? 0. 0. और यहां पे +2. इसका मतलब है मैग्नीशियम हैज लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो रिएक्शन तो हुआ ना? So what about hydrogen? Let's see. Hydrogen is +1 and over here it is 0. इसने इलेक्ट्रॉन लिए, it is reduced. तो इसका भी रिएक्शन हुआ. Third thing is this, chloride. We will not say chlorine because chlorine is Cl2 just by itself. I don't have that. This is chloride. So Cl- and Cl-, ये बस बैठ के देख रहा है कि हो क्या रहा है. जो बैठ के देखते हैं उनको बोलते हैं spectators. This is a spectator ion. It is not doing anything. I'll just throw it out of the ground. कोई काम तो इसका है नहीं. So it is spectator, doesn't matter here. Now let's see. I have 2H plus magnesium making magnesium ion and hydrogen gas. This is aqueous, this is solid, this is aqueous, this is gas. Pay attention, everybody. When this reaction actually happens, what will you see? Let's see. You have a solid here. Sorry, you don't have a solid here. Where did the solid go? Solid dissolved. This is what we call observation. ये observation आप यहां पे भी देख सकते हो. You have a solid here, you don't have a solid here, that means solid dissolves. You have a gas here, you don't have a gas here. So what happens when you see gas coming out? You see bubbles, you see effervescence. So we'll say bubbles. But एक बात है, हिंट दे रहा हूं, एग्जाम में काम आएगा. एवरी टाइम यू राइट बबल्स, मेंशन के कौन सी गैस है, और उसका नाम नहीं लेना, उसका टेस्ट बताना. बिकॉज बबल्स तो कलरलेस होते हैं, हमें कैसे पता कौन सी गैस है? सो वी विल से बबल्स ऑफ गैस
that pops in a flame or pops in a lighted splint. Third thing, that's not an observation, that's a test. Observation होती है कि आपको बस खुद ही नजर आ रही, it is a passive thing. You don't have to do anything. In a test, you have to do something yourself. So एग्जाम में जब वो आपको बोलेगा ना कि ऑब्जर्वेशन, उसका मतलब है कि आपने कुछ नहीं करना, बताओ वहां पे हो क्या रहा होगा. और जब वो आपसे कहते हैं ना राइट अ टेस्ट, उसका मतलब है कि आपको कुछ करना पड़ेगा, फिर उसके रिजल्ट में आपको कुछ नजर आएगा. जैसे ये एक टेस्ट है, आपने फ्लेम लेके आए थे और गैस पॉप कर गई, ये एक टेस्ट है. तो दिस इज ऑब्जर्वेशन एंड दिस होल थिंग इज टेस्ट ऑफ अ गैस. लेकिन अगर इस पूरे रिएक्शन पे एक टेस्ट करना है ना, तो एक टेस्ट ये है, डू यू हैव H पॉजिटिव ऑन द लेफ्ट साइड? We do. Do you have H positive on the right side? We don't. Is there a thing that measures how much H positive you have? कोई ऐसी चीज जो बताती हो कितना H positive है इसके अंदर? बहुत सिंपल सा टेस्ट है, बड़े खूबसूरत से कलर्स आते हैं. लिटमस पेपर. Universal indicator. Universal indicator. All of that is telling me about H positive. Universal indicator measures pH. वो H क्या है? That is how much H positive you have. The pH of this thing will increase because you have lost H positive. आपके पास यहाँ पे H positive है, यहाँ पे नहीं है. H positive is gone. Diya, your question is that how do we know magnesium has lost electrons? So two ways. First of all, we know that magnesium is a metal. When it reacts, it loses electrons and it loses 2 electrons because it's in group 2. Second, we know magnesium is higher in the reactivity series, so it will displace hydrogen by becoming ion, and that ion is positive. Second test. This is something that obviously you will need a thermometer to do. This is an exothermic reaction. सर मेरा क्वेश्चन है. पूछें. सर हम ये लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कि अगर उसकी पीएच इंक्रीज हुई है तो वो एसिडिक से बेसिक नेचर की तरफ मूव कर गया है. हाउ डू यू नो कि बेसिक हुआ? तो उसकी पीएच इंक्रीज हुई है ना, H पॉजिटिव पीएच इंक्रीज हुई है, H पॉजिटिव खत्म हुआ है. जी जी सर. तो इसका मतलब है वो 7 तक आया होगा. ओके सर. 7 से आगे तो नहीं गया ना, ओके सर. क्योंकि अगर हाइड्रोक्साइड होता तो ये 7 से आगे जाता, वो तो नहीं है यहाँ पे. सो वी कैन से दैट इट विल राइज एंड इट माइट गो टू 7. आई डोंट नो, हो सकता है मैंने बहुत थोड़ा सा mg डाला है, कुछ H पॉजिटिव यूज हुए हैं, कुछ नहीं हुए. ओके, so we will, without extra information, we'll simply say कि it will increase. We don't know कि कितना होता है. अच्छा, second question is that how will we know that magnesium is aqueous? There's no magnesium on the right side. First of all, please clear that. Magnesium is only here. ये magnesium है, ये magnesium ion है, because it's part of this compound. Now, how do we know that this is aqueous? For that, we have to know the solubility rules. I will share the notes with you as well. And we talked about it last week, I think Monday की class में, कि solubility rules क्या होते हैं. Okay, so from those solubility rules, we will know these state symbols. So if you're somebody who's confused about के how do I know ये aqueous है या gas है, I will share the link again, and you can check into that. कि how do we put these state symbols there? All right. Because this reaction is exothermic, here's a tip. This reaction is avoided for group 1 or SNAP. Because they are highly exothermic, reaction बहुत explosive होता है. So अगर आप ये lab में कर रहे हो, most likely it will be the last reaction that you do. So I don't want that. So इसलिए we will avoid it for group 1. Okay? All right. So we have this thing. Now, here's a test. Can anybody tell me how I will know the reaction is complete? When there is no pop sound of glowing splint. But वो तो किसी भी वक्त हो सकती है ना? Like if I don't even bring a glowing splint, तब मुझे reaction का पता ही नहीं चलेगा. But you're very close actually.
Very good, Zarmeen. When there is no more bubbles, we know that the reaction has stopped. Okay. Now that can happen because you ran out of HCl, or that can happen because you ran out of magnesium. It could be one of those two things, or it could be that they've just completed reaction. That's fine. But the key is understanding that there is no more bubbles. So when you're writing this out, make sure कि आप examiner को बताएं कि how will he know कि reaction खत्म हो गया. ठीक है. अब ये हो गया. इस reaction, this is such an amazing reaction because इसमें हमें ना बहुत सी चीजें पता चल रही हैं. Number one, it is telling me that जरा देखते जाना कितनी बातें हमें एक simple से reaction से पता चल रही हैं. First of all, it is telling me magnesium is more reactive than hydrogen. Second, it is telling me that this thing is an acid because metal के साथ reaction करके hydrogen gas आ रही है. Third, it is telling me that this thing is a metal because acid के साथ reaction करके hydrogen gas आ रही है. So ये इसको confirm कर रहा है और ये इसको confirm कर रहा है. So अब examiner ATP में आपको एक random metal दे दे और आपसे कहे बताओ भाई ये metal है कि नहीं है, तो आप कहेंगे कोई मसला ही नहीं है, acid लाओ check कर लेते हैं. It's a chemical test. एग्जामिनर आपको कहता है ये रैंडम सॉल्ट है, रैंडम लिक्विड है, बताओ ये एसिड है कि नहीं है. आप कहेंगे नो प्रॉब्लम, ब्रिंग मी मैग्नीशियम, ब्रिंग मी कैल्शियम, ब्रिंग मी आयरन, ब्रिंग मी कॉपर. जिस बच्चे ने कॉपर बोला उसका नंबर नहीं मिलेगा उसे. क्यों? सर कॉपर इज लीस्ट रिएक्टिव. यस, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. कॉपर नहीं इसको रिप्लेस कर सकता. इफ मेटल इज मोर रिएक्टिव देन दिस विल वर्क. तो फिर मैं क्या करूं अगर मुझे कॉपर को चेक करना है? नो प्रॉब्लम, I will do my second test, which is exactly the same as this one. It's its cousin. You don't have metal, right? Metal react नहीं कर रहा. Acid लो, metal carbonate के साथ react कर दो. Salt इसमें भी बन रहा है, gas इसमें भी बन रही है. Salt इसमें भी बनेगा, gas इसमें भी बनेगी. You will get carbon dioxide gas, you will get salt, and you will get a byproduct water. And now, no matter what metal you take, reaction will happen. हाँ वो slow हो सकता है, वो तेज हो सकता है, लेकिन reaction होगा. So with every metal, we can't have this reaction because copper, silver, gold, platinum, they won't. But with every carbonate, we can have this reaction. Okay? All right. Now let's see. I will take a few extra minutes today. So I hope that's fine with you. All right, so let's do this reaction. Let's take HCl now. And this time I want to take copper carbonate. I will get carbon dioxide because carbonates always break down and give us carbon dioxide in water. It will also give me water. And what salt will I get? Can anybody confirm? Copper chloride. Copper chloride. अब मैं copper chloride का formula कैसे लिखूं? For that I will first need to know कि इस कॉपर का चार्ज क्या है. सो उसके लिए आपको कुछ याद करना पड़ेगा, कुछ आपको देखना पड़ेगा. सो फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल हम देखेंगे, वी विल चेक दैट क्लोरीन शुड बी -1, हाइड्रोजन शुड बी +1. और जो आपको याद करना है वो ये है दैट कार्बोनेट इज ऑलवेज -2. मार्स, डू यू हैव अ क्वेश्चन? Carbonate, you will have to remember that this thing is carbonate. The 3 is part of the formula and the charge is -2. And if the charge is -2, the other thing should be cancelling it out. So it should be +2. So यहाँ से हमें copper का पता चल गया. Periodic table से हमें copper का नहीं पता चलता. But यहाँ से हमें पता चल रहा है. So I have copper +2. And I have Cl -1. They will cross multiply. And my formula will be CuCl2. What are these names? Hydrogen chloride, but if it is in water, hydrochloric acid. Copper 2 carbonate, carbon dioxide, water, copper 2 chloride. Okay, so I have all of that. Now let's put the state symbols. HCl, acid hai. Acids are always soluble in water, aqueous. Copper carbonates, har carbonate insoluble hai. SNAP are soluble. All SNAP are soluble. If it is not SNAP, carbonate is insoluble. Hydroxide is insoluble. Oxide is insoluble. Phosphate is insoluble.
So this is solid. You will know these rules from the previous lesson and notes मैं आपके साथ share कर दूंगा right after the class. Don't worry. Carbon dioxide is a gas, water is a liquid, and this thing is again aqueous. This reaction will obviously, I will know when to stop when the bubbles have stopped. But this time, bubbles will not be of gas that pops in a flame. What is the test for carbon dioxide? How do we test if some gas is carbon dioxide? Lime water. Very good. Go on. पूरा test बताओ. Sir, can I? Okay. इतना इंतजार ना कराओ भाई. Sir, it will turn lime water milky. Yes. If you pass the gas through lime water, it will turn milky. It will form white precipitate. Acha. So we will say that bubbles of a gas that turns lime water milky. Okay, so I have this thing. And same reaction, same observations here. It's just that this reaction is not as exothermic. So this is safer to do. So agar I was avoiding it for group 1, I can do it for group 1 now. And it will be much safer for me to do. In fact, we do it all the time. It is so safe to do कि हम baking में से use करते हैं. It releases carbon dioxide and that carbon dioxide makes the thing blow up. तो जो baking dough होती है, उसको volume increase करने के लिए हम carbon dioxide release करवाते हैं उससे. And we take metal carbonates like sodium carbonate. Sodium carbonate नहीं, sodium bicarbonate. Sodium carbonate is used in washing hair. I digress. Okay, so all of that is correct. How does the examiner test us about this in ATP? I told you, ये reaction बड़ा ही ज़बरदस्त है. There's so many angles to this. For example, यहाँ पे, this is confirming that I have carbonate. The moment I add an acid, carbonate will give carbon dioxide. पेपर 4 में एक टेबल होता है या आपको आयंस के टेस्ट आते हैं और उसमें वो एक कार्बोनेट का टेस्ट है. You add dilute acid, it gives carbon dioxide every single time. That's how you know it's a carbonate. And secondly, this carbonate is confirming कि ये acid है because वो carbon dioxide दे रहा है. अच्छा. Anytime a gas comes out in any reaction, यहाँ पे carbon dioxide आ रही है, यहाँ पे hydrogen gas आ रही है. In any reaction in which a gas comes out, you can do the test for rate of reaction. So rate of reaction का इसके ऊपर question आ सकता है. कैसे? पहला स्टेप वो आपसे कहेगा कि डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट. मुझे गैस कलेक्ट करनी है, मुझे बताओ क्या करूं मैं. सो गैस कलेक्शन इसमें कैसे होती है? 2 मेथड्स हैं. सबसे पहले आपने ऑब्वियसली रिएक्ट करवाना है, तो रिएक्ट करवाने के लिए यू ऑलवेज टेक अ कोनिकल फ्लास्क बिकॉज कोनिकल फ्लास्क अलाउज अस टू मिक्स थिंग्स. I will add the magnesium ribbon. मैं पिछले वाले रिएक्शन की बात कर रहा हूं. Magnesium ribbon. I will add the acid in it. Acid add करना है हमने as a liquid है, तो we will use a tap funnel. There will be acid in here coming out. And if I want to collect the gas, then there are 2 ways. One, I can collect the gas in a gas syringe. Obviously, I will seal it, otherwise gas सारी escape कर जाएगी. सब क्या हो रहा है? Excuse me, sir. Yes. Sir, are we talking about downward displacement and downward delivery and upward displacement reaction over here? Downward displacement and upward displacement, we will not use it. Because उसका हमें मेजरमेंट में कोई फायदा नहीं है, कलेक्शन में कोई फायदा नहीं, सारी गैस जाया हो जाती है उसमें. Okay, sir. We will never do that. So let's see. जब भी आपने डायग्राम बनानी है, आपने उसको लेबल करना है. So this is a gas syringe. The tap funnel provides me the liquid. The solid is already there. The hydrogen gas will come out. I will collect it. एक ये मेथड हो सकता है. दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि you will take the same thing. बिल्कुल ये चीज आपने जो ली है, you will take the same thing. But this time, instead of passing it through gas syringe, आप gas syringe की बजाय you will use what we call
यहां पे ना एक आर्म होगी इसकी, सो ये होगा और इसकी एक आर्म होगी. थ्रू दिस आर्म वी विल कलेक्ट, पास इट थ्रू वाटर. ठीक है, तो ये वाटर होगा. वी विल हैव अ मेजरिंग सिलेंडर और इसमें गैस कलेक्ट हो जाएगी. सो द गैस विल कम हियर, बबल्स विल कम और वो गैस यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगी. सो दिस विल बी द गैस कलेक्टेड. This is a measuring cylinder and this is water. This method is safer because अगर गैस एक्स्ट्रा है तो वो escape कर जाएगी. And this is not useful if gas is soluble, like carbon dioxide. कार्बोनेट में हम ये मेथड नहीं करेंगे क्योंकि गैस डिसॉल्व हो जाएगी. ये मेथड चलेगा. And thirdly, gas needs to be dried. And if you remember from previous lessons, we will use through concentrated sulfuric acid to dry the gas. ठीक है? So two methods. तो ATP में गैस कलेक्शन का क्वेश्चन इस रिएक्शन से वो ऐसे रिलेट करता है. ठीक है. अच्छा, again, less dense than air, more dense than air does not matter for us because it's a colorless gas. हमें तो पता ही नहीं लगना कि कितनी गैस आई है और कितनी चलेगी, जाया हो जाएगी हमारी सारी गैस. We will not use displacement methods. अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन का इस पे क्वेश्चन कैसे आता है? रेट ऑफ रिएक्शन में वो क्या करेगा, वो आपसे गैस कलेक्ट करवाएगा, कर ली, उसका ग्राफ बनवाएगा. और ग्राफ दो तरह के होते हैं. एक ग्राफ में यहां पे टाइम होगा और यहां पे वॉल्यूम ऑफ गैस होगी, और एक में यहां पे मास होगा इन ग्राम्स और यहां पे टाइम होगा. इफ अ गैस इज मेड, the volume of gas will increase and eventually go down to a horizontal level. If a gas is made, mass कम होता जाएगा. So it will fall but will never be zero. Remember, it will never be zero. तो आपसे इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेगा कि जी शुरू में इसका रेट कैसे पता चलेगा. ऑब्वियसली इसका टेबल बनेगा, उसमें एक साइड पे मास होगा, एक साइड पे टाइम होगा, सॉरी यहां पे टाइम होगा और यहां पे मास होगा. उस टेबल से ग्राफ आएगा, वो ग्राफ की आपसे ड्रॉ करवाने का कह सकता है. जब भी आपने ड्रॉ करना है, यू हैव टू यूज क्रॉस और यू हैव टू यूज सर्कल डॉट. नेवर ड्रॉ डॉट, कभी भी ड्रॉ नहीं करना डॉट. ऑलवेज ड्रॉ अ सर्कल डॉट. तो डॉट होगा और उसके ऊपर एक सर्कल होगा, डॉट होगा और उसके ऊपर सर्कल होगा. और वो कितना बड़ा सर्कल होना चाहिए? अगर आपको ग्राफ पेपर मिला हुआ है ना, ये ग्राफ पेपर है, तो 4 बॉक्सेस से बाहर नहीं जाना चाहिए आपका सर्कल. सो द मास विल बी ऑफ दिस होल थिंग, जिसमें आपने एसिड ऐड किया है, जिसमें आपने सॉलिड ऐड किया है, जिसमें सारे कोनिकल फ्लास्क सारा कुछ, उसका मास कम होगा क्योंकि गैस विल एस्केप. और वॉल्यूम ऑफ गैस ऑब्वियसली गैस सिलेंडर से हमें पता चलेगी. अच्छा, फिर एटीपी में पूछता है कि अच्छा इसके लिए इक्विपमेंट क्या चाहिए. सो वॉल्यूम ऑफ गैस के लिए गैस सिलेंडर चाहिए, मास के लिए बैलेंस चाहिए. फिर आपसे पूछेगा रेट ऑफ रिएक्शन कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है. ऑब्वियसली द ग्रेडियंट इज गोइंग टू टेल मी रेट कैसा है. तो ग्रेडियंट इज डिक्रीजिंग, रेट इज डिक्रीजिंग. फिर वो आपसे पूछेगा क्यों ऐसा होता है. विल टॉक अबाउट कोलिजन थ्योरी व्हेन वी स्टडी दिस. वो पेपर 2 में आएगा. एटीपी में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं. फिर एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक को इससे वो रिलेट कर सकता है. लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इससे रिलेट करती है, दैट इज सॉल्ट प्रेप. Guys, are you still there? Are you paying attention? Because this is super important. This is the thing I've been waiting for. Let's go back to our equation. मुझे ये सॉल्ट बनाना है. मेरे पास दो मेथड्स आ गए. दोनों बहुत यूजफुल मेथड्स हैं. क्यों? Because I can take the gas produced and know when to stop. जब तक गैस आ रही है रिएक्शन हो रहा है. सॉल्ट प्रिपेयर करने के लिए इन दोनों मेथड्स में हम ये चीज यूज करेंगे, E
S बार बार ES. ये क्या है? What is this? We will start with equation. Examiner आपको सिंपल सा क्वेश्चन देगा. Outline the method to produce pure crystals of magnesium sulfate. ये एग्जामिनर ने बोल दिया. ठीक है, या बल्कि हम कॉपर सल्फेट करते हैं. लेट्स मेक इट अ लिटिल फन. कॉपर सल्फेट बनाना है. ठीक है, विल स्टार्ट विद द इक्वेशन. मेरे पास दो मेथड्स हैं सॉल्ट बनाने के. एक मेथड में क्या है, आई टेक कार्बोनेट विद एसिड. तो दूसरे मेथड में क्या है, आई टेक मेटल विद एसिड. कार्बोनेट विद एसिड, मेटल विद एसिड. मुझे बताएं यहां पे कैन आई यूज द मेटल विद एसिड रिएक्शन? कॉपर मेटल है, नहीं कर सकता ना. This is going to be for P4. So I can't use the metal with acid part. So I will take metal carbonate with acid part. So मैं इस metal carbonate को लूंगा, copper carbonate. I will take that. सर मुझे बात समझ नहीं आई. कैन यू एक्सप्लेन दिस अगेन? देखो, मुझे उसने बोला है मुझे कॉपर सल्फेट बना के दो. ये उसने क्वेश्चन दे दिया. तो मुझे कॉपर या तो मेटल से रिएक्ट कराऊंगा या मैं उसके कार्बोनेट से रिएक्ट कराऊंगा, और सल्फेट वाला एसिड लूंगा, क्योंकि मेरे पास दो मेथड्स हैं. Either I will use metal with acid or I will use metal carbonate with acid. Right? So acid कौन सा होगा जिसमें सल्फेट हो? कौन सा एसिड होता है जिसमें सल्फेट होता है? सल्फ्यूरिक एसिड. Very good. Does everybody understand why I'm using sulfuric acid here? If you don't, please ask. Now's the time. Now I have copper. Copper मेरे पास metal भी हो सकता है, copper मेरे पास carbonate भी हो सकता है, लेकिन because the metal is less reactive than hydrogen, I cannot use this. Sure, Iman. Let's read the question again. The question says, outline the method to produce pure crystals of copper sulfate. If you notice in this thing, I have made salt through this method where I reacted acid with carbonate, and I have made salt when I used acid with metal. Both of these methods produce gas and salt. So अगर मेरा salt copper sulfate है, तो मुझे कोई एसिड चाहिए जो सल्फेट प्रोवाइड करेगा, और मुझे या मेटल या कार्बोनेट चाहिए जो कॉपर प्रोवाइड करेगा. क्लियर? So I need the copper from something and sulfate from something. So my sulfate is coming from the acid and the copper is coming from the metal or the carbonate. ठीक है, मैंने कार्बोनेट ले लिया. How will we know कि sulfur is coming from acid always? Anion will always come from the acid because acid में cation कौन सा है? H positive. वो तो हमेशा H positive होगा ना, तो हमेशा anion acid से ही आएगा salt का. H positive ने तो हाइड्रोजन बन के निकल जाना है या वाटर बन के चले जाना है, तो एसिड में तो पीछे बचा ही anion. Clear? All right, now I have this. Because I'm using a carbonate, it will give me carbon dioxide, it will give me water, and obviously the salt is made. So first step, write the equation. Second step, write the states. Okay, sulfuric acid. Acids are always soluble. I will put AQ. Carbonates are always solids. They're insoluble. Carbon dioxide is a gas. Water is a liquid. Copper sulfate is soluble. Why? Sulfates are insoluble for lead, calcium, barium. Please call back. Again, solubility rules, don't fret over it. अगर अभी नहीं याद, कोई मसला नहीं है. मैंने आपको बताया ES करते जाएंगे हम. ओके, स्टेट्स लिख दिया. नेक्स्ट स्टेप, कब तक ऐड करना है एसिड? फॉर दैट पे अटेंशन गाइस.
हमेशा 1 मार्क मिलेगा इस बात से. Look at the salt you're making. If the salt is aqueous, then the solid should be in excess. If the salt is aqueous, solid should be in excess, so you can filter it out. If the salt is solid, aqueous should be in excess. For us, the equation is balanced, I think. Can you So- explain this point? Yeah, sure. The key is that at the end, we have to get the salt out. To get the salt out, I need to be able to filter it out. If I have two solutions mixed together, तो मुझे तो fractional distillation करनी पड़ेगी. But if I have a solid mixed with a liquid, I can easily filter it out. So we always do a reaction in such a way that if the salt is aqueous, we take the solid extra. And if the salt is solid, we take the aqueous extra. We will do more questions of this tomorrow as well. So here's what we write. Let's start. Add acid to excess copper carbonate. Or you can also say add sulfuric acid to excess copper carbonate. Just this line is going to get you 2 or 3 marks depending on the question. 1 mark for mentioning what is in excess and 1 mark for mentioning what you have to react. ठीक है, salt बन गया, reaction हो गया. Now we have made the salt. The salt is done. Reaction हो गया. We mix them, reaction हो गया. Next step, separation. We could find the limiting reactant through mole calculation. This is the limiting reactant. And usually, whenever you're doing it practically, you know how much copper sulfate to make, so आप calculate करके ही चलते हो. But in ATP, they usually just tell us to outline the method. उसने हमें specify नहीं किया कितने grams बनाना है. इसलिए we don't need to do any calculations here. But good thinking, Manal. All right, so I have a sulfuric acid added to excess copper carbonate. How do I separate solid from aqueous? Filter. Very good. But when should I filter? Should I just filter right away? Add karte saath? I should wait for the bubbles to stop. Once the bubbles stop, now the bubbles stopping part is not worth any marks, but it is good chemistry. And if there is anyone amongst you who is aiming for a distinction, you must write good chemistry. जो मेरी high achievers class होती है, it will start in April. So उसमें हम इन extra बातों को जरूर discuss करते हैं. So once the bubbling stops, that is when you filter. And every time you filter, you wash it. Filter and wash with distilled water. Again, the washing part is also not required, but it is good chemistry. So I've done this. Sir? 2 marks. Yes. सर ये वॉशिंग वाला डिस्टिल वाटर वाला हम हर एक्सपेरिमेंट में यूज कर सकते हैं ना या Yes. स्पेसिफाइड Every time you filter, do it. ओके सर हमने सेपरेट कर लिया है, लेकिन हमने एक्सट्रैक्ट नहीं किया है. एंड दैट्स माय लास्ट स्टेप, एक्सट्रैक्शन. मेरे पास वाटर में कॉपर सल्फेट मौजूद है. मुझे कॉपर सल्फेट चाहिए था, मुझे वाटर नहीं चाहिए. क्या करूंगा? Sir, we can write in the Evaporate. folds of filter paper. It's a lot of water, so you should first evaporate. Okay, उसके yes, बाद first हम we'll करेंगे. evaporate, then we can do it. Yes, evaporate. But then let's read the question again. Crystals चाहिए मुझे. कब तक evaporate करना है मैंने? Evaporate to saturation point, or point of saturation, or point of crystallization. क्यों? मुझे crystals चाहिए. Crystals saturation point के बाद बनना शुरू होते हैं. अगर आप फिर भी हीट करते जाओगे ना, क्रिस्टल नहीं बन पाएंगे. इट विल गिव यू अ ड्राई पाउडर. तो अगर आपको ड्राई पाउडर चाहिए तो यू विल से हीट या इवेपोरेट टू
ड्राइनेस, या अगर आपने वो नहीं लिखना तो कांस्टेंट मास। अगर आपको पाउडर चाहिए और अगर आपको क्रिस्टल चाहिए तो you should write evaporate to saturation point, then slowly cool. The slower you cool it, the bigger the crystals, the better the size. And we have arrived at our last step, which was success. Okay, let's try one more time and then we'll move on. I want to make dry crystals of magnesium nitrate.